Assalamualaikum grade 3. Welcome to your English class. This is your English teacher. Kids, today we will start third chapter of our novel Oliver Twist. The name of the chapter is Oliver Walks to London, and today we will cover half of the chapter. It means we will cover page 14, 15 and 16. So open your reader, Oliver Twist. Kids, I am going to read the summary of this chapter. It means I will tell you the chapter in a short story. You will read the chapter on your own at home, so listen to the summary very carefully. I am going to start chapter number 3, Oliver Walks to London. After running from Mr. Sowerberry's shop, Oliver Twist decided to go to London. As he had no money, so he continued to walk for 5 days without having much food to eat. After 5 days, he walked through the country London and begged for food. On the morning of the 7th day, Oliver came to a town and met a boy named the Artful Dodger, whose real name was Jack Dawkins. He was ugly and dressed in rough men's clothes. He offered the hungry Oliver food and said that he will take Oliver to London with him and will take him to a kind gentleman there who will teach Oliver to earn money. After eating the food, the Artful Dodger took Oliver through the dark streets to an old dirty house. Oliver felt frightened, but he stepped into the house. It was Mr. Fadgen's place. There were 4 or 5 boys sitting in a dark, large room, and Mr. Fadgen was cooking for them. The Artful Dodger introduced Mr. Fadgen with Oliver, saying that Oliver is his friend. The other boys also shook hands with Oliver and seemed very friendly. After having supper, Mr. Fadgen gave Oliver a drink which made him fall asleep. Fadgen was a thief who taught boys and girls how to steal things. For a few days, Oliver stayed in Fadgen's room. Fadgen used to play games with his students in which he taught them different tricks of stealing things. One day, Fadgen sent Oliver with the other boys to work. He still did not know what his work was. The boys stole fruits while they passed by the shops selling them. Oliver did not like this. Then the Artful Dodger said to him quietly, "Do you see that old man standing outside the bookshop opposite? We are going to work on him." सो किड्स, इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको पता है सेकंड चैप्टर में ऑलिवर ट्विस्ट मिस्टर सोवरबेरी के घर से भाग जाता है. इसके बाद ऑलिवर डिसाइड करता है कि वो लंदन जाएगा, क्योंकि उसने लंदन के बारे में बहुत सुना होता है कि वहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं, और वहाँ जाके वो सोचता है कि ऑलिवर बहुत पैसे कमा सकता है. ठीक है, वो 5 डेज़ के लिए चलता फिरता है लंदन जाने के लिए. उसके पास खाने पीने के लिए भी ज़्यादा खाना नहीं होता. एट लास्ट 5 डेज़ के बाद 6th डे में वो लंदन तक पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो खाने के लिए भीख मांगता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, बिल्कुल खाना नहीं होता. वो बहुत दिनों से भूखा होता है और वो बहुत थक भी जाता है. ठीक है, 7th डे की मॉर्निंग में क्या होता है, ऑलिवर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम आर्टफुल डॉजर होता है. ठीक है, और उसका रियल नेम जैक डॉकिंस होता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको आर्टफुल डॉजर कहते हैं. ठीक है, वो ऑलिवर को फूड देता है और वो अपने साथ उसे ले जाता है. वो कहता है मैं तुम्हें लंदन लेके जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें एक आदमी से मिलाऊंगा जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, और वो जो है हम जैसे लड़कों को सिखाता है कि पैसे कैसे कमाते हैं. ठीक है, उसके बाद द आर्टफुल डॉजर जो है वो ऑलिवर को ले जाता है एक बहुत ही पुराने और अंधेरे घर में. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वो मिस्टर फैजन से मिलता है. वो जो जगह होती है वो मिस्टर फैजन की होती है. ठीक है, वहाँ पे 4 और 5 बॉयज़ और बैठे हुए होते हैं, और मिस्टर फैजन उनके लिए खाना पका रहे होते हैं. ठीक है, खाना खाने के बाद जो है मिस्टर फैजन जो है ऑलिवर को एक ऐसी ड्रिंक देते हैं जिससे वो सो जाता है. लेकिन असल में मिस्टर फैजन कौन होते हैं, वो एक चोर होता है. ठीक है, जो कि लड़के और लड़कियों को सिखाता है कि चोरी किस तरह करते हैं. कुछ दिन जो है ऑलिवर मिस्टर फैजन के घर में ही रहता है, उनके कमरे में. ठीक है, और वहाँ पे मिस्टर फैजन जो है बाकी लड़कों के साथ ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसमें वो उनको सिखाते हैं
कि चोरी कैसे करनी है, ठीक है। ओलिवर ये सब देखता है और एक दिन मिस्टर फैजन से कहते हैं कुछ डेज़ के बाद कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अब तुम इस काबिल हो, तुमने सीख ली है, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि तुमने इन लड़कों के साथ जाके काम कैसे करना है, ठीक है। तो वो ओलिवर जो है उन लड़कों के साथ जाता है, लेकिन ओलिवर को अभी भी पता नहीं होता कि उसने क्या काम करना है, एग्जैक्टली उसका काम क्या है। वहाँ पे रास्ते में वो देखता है कि जो उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स या जो दूसरे बॉयज़ होते हैं वो जो है किस तरह जो है फ्रूट शॉप से गुजरते हुए फ्रूट चोरी कर लेते हैं। ओलिवर को ये देखता है लेकिन उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर क्या होता है कि वहाँ आर्टफुल रोजर से कहता है कि तुम्हें एक वो बूढ़ा आदमी नज़र आ रहा है जो बुक शॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है, अब हम उस पर काम करेंगे। ओके, सो किड्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 14, 15 एंड 16 वेरी केयरफुली. You have to underline all the difficult words and find their meanings from dictionary. Okay, I hope you understand. Thank you kids. Take care. Allah Hafiz.